Hello students, today we are going to discuss physics class 11th chapter number 2 that is units and measurements. इसका लेक्चर नंबर 2 लेके मैं आपके समक्ष आया हूँ. दिस लेक्चर नंबर 2. Myself Mehul sir, and in the earlier lecture, the first lecture we have discussed types of physical quantity. Two types of physical quantity, fundamental and derived. In fundamental physical quantity, we categorize 7 fundamental physical quantities. Okay, if you remember that table, so easily you can understand this lecture. Whatever we are discussing today, that you have to easily you understand. Now we are focusing another types of physical quantity, that is derived physical quantity. In that one we explain the so many number of example like density, speed, acceleration, force, etc. एंड उसके कनेक्टेड टॉपिक है वो है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज. सो व्हाई दिस नेम इज गिवन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज. 1971 में पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट इकट्ठा हुए थे उन सभी ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन की थी. उसके अलावा जो 2 रह गई थी वो उसका नाम दिया है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज. Which 2 physical quantities is missing, so that 2 is categorized in this one, supplementary physical quantities. So number 1, first physical quantity is plane angle, and you remember this notification theta. How we can read theta? The symbol of plane angle is theta. This is very helpful in mathematics as well as in physics. So if you observe this diagram, what we are drawing, one point O. If we take one point O and if we make the arc AB from the point O, so say this distance OB is R and angle made with these two lines is theta. So this theta is known as plane angle. This theta is known as plane angle. And what is the definition of this theta? So that plane angle is nothing but the ratio of arc upon radius. So which one is my arc? AB. AB is my arc. So what we can write, arc AB, and radius, the symbol of radius is R. So it simply denote as AB upon R. AB upon R. What is the unit of this new physical quantity? So you have to remember the unit is radian. Unit is radian. And the symbol is RAD. The symbol is RAD. इसको हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे. डिटेल में पढ़ने वाले व्हाट डू मीन बाय रेडियन, डिग्री, ऑल दिस थिंग. ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट प्लेन एंगल. हाउ यू कैन इमेजिन, जस्ट अ मिनट. दिस इज माय लाइन 1 एंड दिस अनदर लाइन. ये आप देख रहे हो, इसके बीच में जो एंगल है ये वाला, ये एंगल, उसको हमने थीटा रिप्रेजेंट किया. सो ये प्लेन में हुआ, ये वर्टिकल प्लेन हुआ. So that's why the name is given plane angle. The name is given plane angle. Look like this. This is one line and this is another line. So this is my arc. This is my arc. So angle formed over here, that is known as plane angle. Similarly, another supplementary physical quantity is solid angle. The symbol of solid angle is omega. Why we are writing this as omega? You do not read as ohm. In 10th standard you are represent this symbol is unit of resistance, but we are focusing over here. This is not ohm, this is omega. Symbol is same but you refer this word omega. So what is the definition of this solid angle? So solid angle is defined by area upon radius square. This is radius square. So how we can draw the diagram for solid angle? ये आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, ओनली डायग्राम आपको समझना है. सो व्हाट इज दिस डायग्राम? दिस इज पॉइंट O. ये कौन सा शेप है? अ पीस ऑफ वाटरमेलन. आपने देखा होगा जो वो हमको कट करके देता है. सो दिस एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल एंड द सिंबल फॉर सॉलिड एंगल इज ओमेगा. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? ओमेगा इज नथिंग बट इतना शेडेड एरिया कवर होता है, इतना. डेल्टा ए, you know the A is symbol for area, so delta is means small area. So what is the definition? Omega is equal to area upon radius square. Area upon radius square.
सो यहाँ पे स्क्वायर आता है, वाई स्क्वायर बिकॉज ऑफ एरिया. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी? टी रेडियन. सो व्हाट इज सिंबल? SR. S for T and R for radian. So these are the two supplementary physical quantities. Okay. Next, very important formula for all competitive exam point of view as well as for physics subject point of view, that is dimensional formula. So what is the meaning of this word? Let's discuss. When any physical quantity is expressed with appropriate power of m, l, t, where m is mass, l is length, t is time, etc., then such kind of expression for given physical quantity is called simply df. Df means dimensional formula. Simply, how we can understand this dimensional formula? Let's take one example, say mass. So what is the first letter? Capital M. For length, capital L, and for time, capital T. What is the power of mass? 1. That's why we are writing the power of M is 1. Similar way for length, 1. For time, 1. For electric current, what is the symbol of electric current? SI unit. Yesterday हमने पढ़ा था ampere. So we write A1. In this way, we can define any physical quantity and its dimensional formula. So हम अभी इस लेक्चर में 5 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, SI यूनिट एंड CGS यूनिट, डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. एरिया. So what is the symbol of area? Capital A. What is basic formula you learn in lower standard? Length into breadth, L into B. What is length? Length measured in meter. You recall the two full form. Yesterday we have discussed. One is CGS, centimeter, gram, second. One is MKS, meter, kilogram, second. MKS is also called as SI. MKS को SI में मर्ज किया जा चुका है. So what is SI unit? For SI unit, you have to remember the full name of MKS, meter, kilogram, second system. So what is SI unit? Length का meter, breadth का meter. So meter into meter, meter is to 2 meter square. Similar way, what is CGS unit? You recall the full name of C, centimeter. That's why in place of meter we have to write centimeter. So centimeter square. What is the dimensional formula of A? What is dimensional formula? So you look at over here. Meter is related to length. Meter is unit of length. So that's why we are writing L. And what is the power? 2. What is the power? 2. So L2 is the dimensional formula for area. This is very simple method to understand any dimensional formula. Okay. Second example, that is volume. So आपको अब पता चल गया होगा कि हम पहले फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं, उसका सिंबल, देन उसका फॉर्मूला, देन SI यूनिट, CGS यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला. ओके. सो one thing you keep in your mind, whenever we are writing the dimensional formula, you mention the square bracket. You mention in square bracket. ये rules है. Okay. Second one is volume. So volume is represented as LBH, length into breadth into height. So what is its SI unit? SI means MKS. So MKS में इसका मीटर. So meter is to power 3, meter cube. CGS centimeter cube. So easily you derived from this full name, centimeter cube. Now what is the power of L? What is the power of L? What is the power of meter? 3. So simply we can write L raised to 3. So this is the dimensional formula of volume. Next one, density. 9th standard में आप सब फिजिकल क्वांटिटी पढ़ चुके हो. यदि आपको फॉर्मूला नहीं आता तो अब आपको रटना पड़ेगा. डेंसिटी, द सिंबल है रो. हिंदी का जो 9 आता है वो हम ऐसे लिखते हैं, इसे रीड करते हैं रो.
So what is the definition of density? Mass divided by volume. So mass is represented as small m, volume means capital V. अभी हमने दो फिजिकल क्वांटिटी 1 और 2 में देखी, एरिया एंड वॉल्यूम. सो वॉल्यूम, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम? मीटर क्यूब. Which unit? SI unit. What is the unit of SI unit of mass? Kilogram. So what is symbol? Kilogram. So what is the SI unit for density? Kg per meter cube. Kg per meter cube. What is CGS unit? You recall the full name of CGS? Centimeter, gram, second. So here we have to write in place of meter centimeter, in place of kg gram. So gram per centimeter cube. Gram per centimeter cube. What is dimensional formula of density? Simply we can write over here, we also write in this manner kg. यदि हम मीटर क्यूब को न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो -3 होगा. नाउ यू रिप्लेस kg is the unit of mass. So m1, how much power is present? 1. For similar way for length, so l raised to how much power? -3. इधर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सिमिलर वे, फोर्थ वन, स्पीड और वेलोसिटी. राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग डायमेंशनल फॉर्मूला. सो ये दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, ऐसे दैट्स व्हाई वी हैव रिटन स्लैश, अदरवाइज इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है. So speed is equal to distance upon time. Speed equal to distance upon time. What is SI unit? Distance, meter, and time का क्या है? Second. So this SI unit. What is CGS unit? Centimeter, gram, second. So second remain as it is, and meter is converted into centimeter. So centimeter per second is CGS unit. Now आप easily इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो. इसको ऐसे लिखा जा सकता है और इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द पावर ऑफ मीटर? ये मीटर है, सो लेंथ की पावर 1. ये टाइम है, सो टाइम की पावर -1. ओके, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड. एंड लास्ट वन, दैट इज एक्सेलरेशन. व्हाट इज एक्सेलरेशन? फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ये आपको याद रखना है, सभी के फॉर्मूला आपको आने चाहिए. Change in velocity upon time. What is change in velocity? Unit of change in velocity, SI unit, that is meter per second upon second. So if we simplify this one, so we can write meter per second square. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा. सो हाउ वी कैन राइट दिस SI यूनिट विद द हेल्प ऑफ दिस वे. ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट इज CGS यूनिट? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इफ वी हैव टू गो फ्रॉम MKS to CGS unit, directly we return in place of meter we have to write centimeter. Second remain as it is. Now finally, what is the dimensional formula of A? So we can write the power of meter. Meter means length. So L1, and what is the power of time? -2. ये हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इसकी जो पावर है वही हमको पुट करनी है. ओके, सो यू रिमेंबर दिस बेसिक्स ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला. अभी हमको और फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है, लेकिन वो अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ढेर सारे वीडियो के लिए आप बेल आइकन को क्लिक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं मैथ्स और फिजिक्स का सब्जेक्ट क्लास 11th, 12th एंड 10th स्टैंडर्ड का, वो सभी को एडवांटेज मिले. थैंक यू.